Hello everyone, I am MD.M. I hope you guys are fine and doing well. So today we'll continue our video of the poem A Legend of Northland. Today we'll go through a stanza-wise description. The poem is a narrative set in the backdrop of cold region of Northland, far far away, close to the North Pole. तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉर्थलैंड विच इज़ वेरी फार अवे एंड क्लोज टू द नॉर्थ पोल, जो कि बहुत दूर है और नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब है. जस्ट बिकॉज ये नॉर्थ पोल के करीब है, सो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड देयर. It is a place where the sun shines for a very short while the nights are extremely cold and dark. It is a place where days are very short, but night it is too long that it is difficult to go through, to sleep throughout the night. यहाँ पे क्या होता है? देखो, नॉर्थ पोल पे जो आपके डेज जो होते हैं उसके आवर्स बहुत ही कम होते हैं, बट जो नाइट्स हैं वो बहुत ही लंबी होती है. क्योंकि रात जो होती है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए क्या होता है, किसी के लिए भी सारी रात सोना भी क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है. और क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डार्क. विंटर्स आर सो लॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंड्योर दैम, एंड इट इज़ रियली वेरी कोल्ड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू टॉलरेट इट. जितनी ज़्यादा ठंड होती है वो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना क्या है, बहुत मुश्किल है. द विंटर नाइट्स आर लॉन्ग एंड बिटरली कोल्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्लीप एट नाइट. जो सर्दी की जो रात जो होती है वो क्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा सीवरिंग कोल्ड होता है और लोगों के लिए मुश्किल होता है रात में सही से सो पाना. इट इज़ अ लैंड वेयर द फास्ट मूविंग reindeers are harnessed to the sleighs when it snows, and the children wrap in their furry woolen warm clothing look like a beer cup. देखो, चूंकि वहाँ क्या होता है, स्नोफॉल होता है, सो ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट. लोग क्या करते हैं, रेंडियर्स जो कि वहाँ पाया जाने वाला जानवर है उसको किस चीज़ से बांध देते हैं, स्लेज जो होता है दैट इज अ व्हीकल विदाउट व्हील्स. उसको क्या करते हैं, किससे टाई कर देते हैं, उसको स्लेज से बांध देते हैं, एंड दैट लेटर ऑन इट विल ट्रांसपोर्ट इट. ठीक है, बाद में रेंटियर जो होता है वही क्या करता है, उसको पुल करता है. और बच्चे, जस्ट बिकॉज एज इन द बिगनिंग ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट मीन्स देयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, सो चिल्ड्रेन, बच्चे जो होते हैं, इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्फ वार्म दे रैप इन देयर फरी वुलन वार्म क्लॉथिंग. तो क्या होता है, वो फर वाले वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं which will give them the appearance of a cup. A strange tale is narrated in that region of severe cold and long winter. इस रीजन में भी एक बहुत ही स्ट्रेंज टेल है जिसको कि क्या किया जा रहा है, नैरेट किया जा रहा है. इस रीजन के लिए भी एक स्टोरी है, एक कहानी है. द स्टोरी इज क्वाइट फेमस and has been passed on through generations in Scotland. ठीक है, ये स्टोरी जो है ये काफ़ी फेमस है. इसी वजह से क्या हुआ, इसको हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास किया गया है इन स्कॉटलैंड. तो पहले ये समझ लो, देखो ये स्टोरी जो है ये काफ़ी अनयूजुअल है एंड पीपल कांट टेल अबाउट इट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट वॉट एवर इट इज़, it passed from one generation to another in the land of Northland in Scotland. The poet does not believe the story to be true, yet is tempted to share it. Even poet, she doesn't believe that it is a true story, but even though she is tempted to share it, even the poet, she is not sure about it whether the story which she is going to narrate is true or not. But in spite of that, she is really very curious to let us know that story. The poet is
hopeful that we will be able to convey an important lesson of life, and that is why he wishes to narrate it. And what is the reason behind it? Why the poet wants to let us know this story? Why poet want us to learn this story? Just because it is a message conveying story, so which will help us to grow as a better human, So that is the reason why the poet is tempted to let us know this story. क्योंकि इसमें क्या है ना, एक मोरल है, एक मोरल स्टोरी है, which will teach you something, which will help you to grow as a good human. So that is the reason why poet is quite curious to narrate this story. So guys, thank you very much. इसके बाद हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंजर को. Till the time, take care of yourself.